Welcome to the series of differential calculus. We are doing our first chapter, that is pedal equation and derivatives of the length of an arc. इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था पोलर कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स. अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे लेंथ्स ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल. उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट एंड उसके बाद हमारा टॉपिक होगा पेडल इक्वेशंस. इसकी दोनों फॉर्म हम देखेंगे, पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे. तो हम देखते हैं सबसे पहले लेंथ्स ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल. तो वी हैव आवर पोल एंड दिस इज आवर इनिशियल लाइन, दिस इज any given curve and this is point on the curve P, that is r and theta. Now OP is our radius vector. We draw a tangent on P. We extend this tangent downwards and we draw a perpendicular line to the OP. Now we draw the perpendicular line to the OP which meets on this tangent at some point, let's suppose T. Now this angle we know, that is phi, angle between radius vector and the tangent, and we draw a perpendicular line passing through point P. Then what it should be, this line which meets this line OT to on N. Okay, now this angle is phi and this angle is 90. Then this angle should be 90 minus phi and this angle should be phi. Okay, now first definition देखते हैं कि जो पोलर टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल क्या होते हैं. तो ये जो PT है, ये हमारी है जो है टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट इज PT एंड subtangent is our OT, normal is ONP and subnormal is ON. Now we have to find the lengths of PT, OT, NP and ON. First we see the length of tangent, that is PT. Now in the triangle OPT we can write here sec phi equal to hypotenuse upon base. Okay, then what is hypotenuse? That is PT upon base, that is R or OP. Okay, then we can write PT equal r sec phi. Now we want to relation between r and theta, so we have to remove this phi and instead of phi we convert phi into r or theta. Then we know the value of tan phi, r d theta upon dr. Okay, we have seen this relation in the previous video. Now we convert sec phi into tan phi, then we put this value. Now PT equal r, we can write sec phi as 1 plus tan square phi, because sec square phi to the 1 plus tan square phi. Okay, now we can put the value of tan now here, 1 plus tan square phi, that is r square d theta upon dr whole square. Now we get the value of the length of PT or our tangent is equal to r into the root 1 plus r d theta upon dr का होल स्क्वायर. तो ये हमें जो है टेंजेंट की लेंथ मिल गई. उसके बाद हम देखते हैं सब टेंजेंट, दैट इज आवर OT. नाउ वी यूज फॉर दिस we need OP, then we use tan phi. Then what is tan phi? Tan phi equal OT upon R. Okay, OT upon R. Then our tangent, subtangent, sorry, will be
OT equal R tan phi, right? Now we can write simply OT R, and what is tan phi? R d theta upon dr, that is the length of subtangent, that is R square d theta upon dr. Now we find the length of normal. We find the length of normal now. Okay, to find the length of normal, that is Pn, we use this triangle OPN. Okay, now we have to find Pn. Okay, that is our normal. Now we use cosec phi, then we find hypotenuse upon perpendicular, that is our Pn upon R, right? Then cosec phi equal Pn, that is our polar normal, upon OP, that is R. We can write Pn equal R into cosec phi. What is cosec phi? We can write cosec phi equal 1 plus cot square phi. Okay, 1 plus cot square phi, because we know the value of tan and we can convert sec phi into tan phi. After that we can put the value. Now what is Pn? R into 1 plus, now we have the value of tan, then we can find the value of cot, that is 1 upon R dr upon d theta. Okay, now we can simplify this term, R multiply under root 1 plus 1 upon R square dr upon d थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, तो हमें हमारा पोलर नॉर्मल मिल गया. इसके बाद हम देखेंगे पोलर सब नॉर्मल. What is subnormal? This is our subnormal ON. Now we use for this tan 90 minus phi, then tan 90 minus phi equal ON upon OP. So tan 90 degree minus phi equal ON upon OP. OP, that is R. Now we can write ON, that is our subnormal. Write R tan 90 minus phi, that is cot phi, right? R cot phi. Okay, now ON equal R. What is cot phi? 1 upon R dr upon d theta. Then will simply ON will be dr upon d theta. Okay, so we have seen length of polar, tangent, subtangent, normal and subnormal. Now we move forward to the next topic, that is length of the perpendicular from pole to the tangent of a given curve. Now I pause the video to draw the diagram. Now we have to find the length of small p, that is OM, because this is the perpendicular drawn from the pole to the tangent. For this we use this triangle OPM, that is in this triangle we have to find P. Then I can write OM equal, we know the value of OP, so we use 10, then sine, so I can write because sin phi equal to perpendicular upon base, hypotenuse, that is R. Now I have perpendicular OP and this is our sin phi. Okay, so what is OM? OM equal, we suppose OM small p, that is our required length of perpendicular drawn from the pole. OP is our radius vector and sin phi, we can write this is equation our first. Now we have to change phi into terms of r or theta, right? So we know the value of tan phi, that is r d theta upon dr. Now we can change sine into cosec, then cosec will be changed into cot, and we can put the value of
1 upon 10, that is cot. So for this purpose I inverse because we need cosec, and square because we need the sine square, that will be easy to change in the 10. Okay, so 1 upon p square I can write 1 upon r square and 1 upon sine square phi, that is cosec square phi. Now we can write 1 upon r square 1 plus cot square phi. Okay, that is trigonometric function formula. Now we know the value of tan phi, then we can simply derive the cot phi from the tan. Then 1 upon r dr upon d theta. Now we have to further simplify this. I can write 1 upon r square to 1 plus 1 upon r square dr upon d theta whole square. Now what is the, we get the length 1 upon r square plus 1 upon r to the power 4 dr upon d theta whole square. This is our required length. Here we can find p easily. Now if I change it to in a standard form, then simply I put the, let the 1 upon r equal u, then we can write 1 upon p square equal to u square plus du upon d theta and whole square. Okay, I think you understood how with this we have put 1 upon r equal u, then this term will be u square, and 1 upon r to the power 4, then we can use u to the power 4 because we put 1 upon r equal u. Now we have to do the differentiation of 1 upon u, that is r, in with respect to theta, and this is square. Now we can write u square plus u4. What is the differentiation of 1 upon u with respect to theta? Minus 1 upon u square du upon d theta. I hope you know that. Now we can simply simplify this. Then we can write u square plus u4 into 1 upon u4 du upon d theta and whole square. Now this is the value we derived. Okay, we can simplify and we get the value. This is I hope you understood this. Now simply we move to the next topic, that is our important topic, pedal equations. Okay, we know the about pedal equations. तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि पैरेलल इक्वेशन होती क्या है. तो पैरेलल इक्वेशन इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन p and r, small p and small r of any given curve. ठीक है, then I can write relation between small p, that is our length of perpendicular from pole to the tangent, and r, that is our radius vector. Relation between r and p and r of any polar curve. This relation between p and r is known as the pedal equation of that curve. तो सिंपली हमें पैरेलल इक्वेशन की जब भी बात आती है तो हमें केवल उस जो उस कर्व की इक्वेशन है उसे p एंड r में चेंज करना है और वही हमारी पैरेलल इक्वेशन होगी. ठीक है, तो इसके दो फॉर्म होते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं पोलर फॉर्म. यदि हमें जो ये कर्व है वो पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, सपोज हमें कर्व दिया हुआ है f of r, थीटा equal 0. This is our given curve, and we know the relation between p and r we derived in the p, r and theta we derived in the next previous slide. Then 1 upon p square equal to 1 upon r square plus 1 upon r to the power 4 dr upon d theta whole square. Okay, this is our question second. Now we have to simply remove the theta
from both 1 and 2, and we will get the required equation. That will be our pedal equation, because that will be in the terms of P and R. Okay, so remove theta from 1 and equation 2, we will get pedal equation of given कर्व. ओके, अब देखते हैं हमारी अगर हमें कर्व जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम उसकी पैरेलल इक्वेशन कैसे निकालेंगे. तो अगर हमें कर्व कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसकी पैरेलल इक्वेशन कैसे निकालेंगे. लेट्स सपोज गिवन कर्व विच एक्स एंड वाई इक्वल टू, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, और हम एक रिलेशन जानते ही हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था. ठीक है, इसके बाद अगर हमें किसी जो कर्व है इसके किसी बिंदु सपोज P दैट इज एक्स एंड वाई पर हमें इसकी जो टेंजेंट दी हुई हो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं. तो टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट, लेट्स सपोज P एक्स एंड वाई ऑफ गिवन कर्व. तो कैसे निकालते हैं हम किसी बिंदु एक्स एंड वाई से किसी गुजरने वाली किसी कर्व की रेखा, स्पर्श रेखा. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं y माइनस वाई. आई होप यू नो दैट इज़ अवर स्लोप एंड x माइनस एक्स. ओके, तो हमें निकालनी है मूल बिंदु से गुजरने वाली, दैट इज़ ओरिजिन. ठीक है, तो हमें जो लंब की लंबाई निकालनी है दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर ओरिजिन टू द टेंजेंट. तो हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 0,0 to the tangent. What is our tangent? This is our tangent. Now this is equation number 3. Let's suppose now I put the value this point in this line. Then let's suppose this length, the perpendicular length, let's suppose that is P. Now okay, this perpendicular length from the origin to the tangent, this is P, we suppose. Now we can write 0,0. We can put this point into this equation, then we will get x dy by dx minus y upon under root. I hope you know how to find how we find the perpendicular length of a point from any line. That is 1 plus dy upon dx whole square. Okay, this is our relation between P and xy. Now simply this is our equation 4. Simply we remove the x and y from equation 1st, 2nd and 4th. एंड 4th से जो है x एंड y को रिमूव करने पर वी विल गेट अवर पेडल इक्वेशन. ठीक है, तो आई होप आपको ये पता होगा कि ये जो डिस्टेंस है हम कैसे निकालते हैं. चलो इसे भी देख लेते हैं. सपोज हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है x है एंड x1, y1. ओके, और इस बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है. दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन. एंड हमें एक रेखा दी हुई है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0. सपोज ये रेखा हमें दी हुई है और इस पॉइंट से इस बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है. तो वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन. नाउ सिंपली वी कैन राइट इट this line ax plus by plus c. We can use this point into this line, then we will get ax1 plus by1 plus c upon under square root of we will write the sum of squares of
the coefficients of x and y. Then what is coefficients of x in this given line? That is our tangent in reference of this line, then plus b square, that is our coefficient of y in this given line. And this is our required, let's suppose, p length. This is perpendicular length drawn from this point on this line. Okay. Similarly, we can see in this line we draw this, we derive this perpendicular length from the origin to this tangent. Now simply we put this point origin in this line, then we get this. And what is the coefficient of y in this line? That is 1. Then v square 1 square, this is 1, plus we square the coefficient of x, that is dy by dx. Okay, then we get this relation. Now we simply remove the x and y from 1, 2 and 4, then we will get our required Pedal equation for this given Cartesian curve. अब हम अगली वीडियो में जो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू टॉपिक वी हैव डन इन प्रीवियस स्लाइड्स related to pedal equations and many more. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.